डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा? Welcome, my dear AS students, to the ASRARIA notes coaching classes. Now we are going to study the Senior Zoology Intermediate Public Examination March 2024 section on very short answer question. Third VS review. As usual, I am going to give you 4 AS questions, out of which one will definitely be there in your upcoming Senior Zoology board exam paper. Okay, let us see what is the third question. What is a triad system? Right? It is related with the muscular system of human beings. As we know, our skeletal muscle shows number of skeletal muscle fibers and fibrils, right? Each muscle fiber is surrounded by a plasma lemma that is known as sarcolemma, right? And cytoplasm of the skeletal muscle is known as sarcoplasm, right? So, in some part of our skeletal muscle fiber, the sarcolemma invalidates this sarcolemma invalidates to form transverse tubules, T tubules. Form what? Transverse tubules, right? From either side of these transverse tubules, we have cisternae of endoplasmic reticulum. What we have? Cisternae of endoplasmic reticulum. So, endoplasmic reticulum of skeletal muscles are known as sarcoplasmic reticulum, right? Endoplasmic reticulum of skeletal muscle is known as sarcoplasmic reticulum, which shows cisternae and L tubules, longitudinal tubules, right? So this is what is cisternae and this is longitudinal tubules, right? So cisternae of sarcoplasmic reticulum of skeletal muscle consists of calcium ions in it. What it contains? Calcium ions in it. So these transverse tubules along with the either sides of cisternae of sarcoplasmic reticulum containing calcium ion togetherly form a triad. This triad is known as muscle triad. And this is called a triad system of a skeletal muscle. What happens, when the nerve impulse reaches the skeletal muscle sarcolemma, it passes through the transverse tubule. As the nerve impulse reaches here, this sarcoplasmic reticulum cisternae releases the calcium ion, right? That is the first step of muscle contraction. So we will get in the muscle contraction video lecture. Here, what is the question? What is a triad system? The transverse tubule of a skeletal muscle along with either side of sarcoplasmic reticulum cisternae with calcium ions in it forms a triad that is called as muscle triad, and this is a triad system of skeletal muscle. Then, yeah, answer ho gaya. Distinguish between red muscle fibers and white muscle fibers. Red muscle fibers, में मालूम आ रहा क्यों? Because presence of hemoglobin. White muscle fibers, hemoglobin content very much less रहता. यहाँ पे hemoglobin content very much high है, इसका मतलब red color दिख रहा. Red muscles. Red माने aerobic hemoglobin जब है, blood supply जब है, तो इसको बोलते हैं अपन aerobic muscles. But whereas white muscles क्या बोलते हैं अपन? Anaerobic muscles बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Anaerobic muscles. Aerobic muscles माने high respiration माने mitochondria level बहुत ज्यादा रहता है. क्या रहता? Mitochondria level बहुत ज्यादा रहता. तो यहाँ पे क्या रहता? Mitochondria कम रहता. ठीक है, तो ये था अपना रेड मसल फाइबर्स, व्हाइट मसल फाइबर्स. रेड मसल फाइबर्स को एरोबिक मसल्स भी बोल रहे हैं. क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हेमोग्लोबिन वैल्यू बहुत ज्यादा है इसमें. तो हेमोग्लोबिन ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज myoglobin. Hemoglobin of skeletal muscle is called as myoglobin. So red muscle fibers also called as aerobic muscles. White muscle fibers also called as
anaerobic muscles. Here we have high amount of myoglobin. Here we have less amount of myoglobin. Here we have very much more number of mitochondria. Here we have very less number of mitochondria. Then, so next question. Name two cranial sutures and their locations. Cranial sutures. Sutures are nothing but joint between the cranial bones. एक ऐसा joint जो immovable है. Sutures are immovable joints. Immovable joints. कहाँ पे पाए जाते हैं? अपने cranium में पाए जाते हैं. इसलिए उनको बोलते हैं cranial sutures. Immovable joints between the cranial bones are called as cranial sutures. Name two. क्या है? एक तो कोरोनल सूचर है और दूसरा क्या है? लैम्डॉइड सूचर. कोरोनल सूचर यानी क्या? ये अपना फ्रंटल बोन है. फ्रंटल बोन ये अपने पेराइटल बोन्स है. पेराइटल बोन्स. तो a joint between frontal bone and two parietal bones, this transverse suture is called as coronal suture. तो coronal suture क्या है बेटा? ट्रांसवर्स suture है. ठीक है. कहाँ पे है? In between frontal bone and parietal bones. Right? अब लैम्डॉइड suture कहाँ पे है? अपने जो पेराइटल बोन है, पीछे का जो बोन है अपना, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन. तो दो पेराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन के जॉइंट कैसा है स्ट्रक्चर? लैम्डा के जैसा स्ट्रक्चर है. कैसा है? लैम्डा के जैसा स्ट्रक्चर है. इसलिए उसको बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर. इट इज प्रेजेंट लैम्डॉइड सूचर प्रेजेंट इन बिटवीन पेराइटल बोन्स एंड ऑक्सीपिटल बोन. पेराइटल बोन्स एंड ऑक्सीपिटल बोन्स. ये रहा आपका तरस. अब लास्ट वाला क्या है? नेम द ईयर ऑसिकल्स एंड देयर इवोल्यूशनरी origin in human beings. Name ear ossicles. Ear ossicles are nothing but thin, tiny, bony things. Thin, tiny bones which are present in the middle ear, right? अब उसको कैसा याद रखते हैं आप? निमोनिक इस याद रखो. From outside to inside. 3 ear ossicles है. कितने ear ossicles है? 3 ear ossicles in each ear. एक कान में 3 ईयर ऑसिकल्स है. 2 कानों में 3 + 3 6 हो गए. राइट? तो 3 thin tiny bones present in the middle ear of the ear is called as ear ossicle. There are 3 ear ossicles from outside to inside. Miss from inside to outside. See. आप जैसा याद रखते हैं वैसे याद रखो. M for Malleus, I for Incus, S for Stapes. Malleus is nothing but a modified articular bone. Right? And Incus is nothing but modified quadrate bone. Or Stapes is nothing but modified thiomandibular bone. 3 ear ossicles, Malleus, Incus, Stapes. Malleus are modified articular bone. Incus are modified quadrate bone. Stapes modified thiomandibular bone. इसको निमोनिक कैसा याद रखते हो भाई? अपनी जो मूवी है नहीं तो ही मिल गया. माँ जो सब कुछ दिख रहा है माँ, तो उसी तरीके से Malleus is nothing but MA is a modified articular bone. Right? Ma. Incus. I for Incus, Q for quadrate. IQ. तो आपको क्या बताया? कोई मिल गया हमें. ऋतिक रोशन का IQ बहुत ज्यादा रहता है. Then Stapes is a modified thiomandibular. SH by shine. और वही मिल गया. ऋतिक रोशन कैसा रहता? बड़ा शाही रहता प्रीति जिंटा के साथ.
राइट। तो ये निमोनिक याद रख लीजिए, तो आपका ईयर ऑसिकल्स याद रह जाएगा। 3 thin tiny bones in the middle ear of the ear are called as ear ossicles. M for Malleus, I for Incus, S for Stapes. Malleus कैसा है? Modified articular bone. Incus कैसा है? Modified quadrate bone. Stapes कैसा है? Modified hyomandibular bone. इसको कैसा निमोनिक याद रखना? कोई मिल गया का ऋतिक रोशन? स्कीमा माँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है माँ। Malleus MA articular. Incus I quadrate Q, IQ. ऋतिक रोशन का IQ बहुत ज्यादा रहता। Then S for Stapes, hyomandibular, HY, shy. ऋतिक रोशन बड़ा शाय रहता अपनी जिंदा के साथ, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड ईयर सेक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल असरारिया नोट्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फोर्थ ईयर के साथ। टिल देन टेक केयर। Monster.